hemoglobinopathy, it is a specific term, means disorders जो hemoglobin की abnormality से cause होते हैं, like hemoglobin की abnormal synthesis की वजह से जो disease cause होते हैं, that are known as hemoglobinopathies. Sickle cell anemia and hemoglobin C are the classical example of hemoglobinopathies, whereas thalassemia is a quantitative disorder, means hemoglobin की synthesis कम हो जाती है. इस पार्ट में हम सिकल सेल एनीमिया डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट पार्ट में वी विल डिस्कस अबाउट थैलेसेमिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिकल सेल एनीमिया. एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की वजह से ये सबसे कॉमन डिसऑर्डर है, जहां नॉर्मल कॉन्केव आरबीसी का जो शेप होता है, नॉर्मल कॉन्केव शेप का जो इरिथ्रोसाइट है, इसका शेप चेंज हो जाता है क्रीशिएंट शेप में और इसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत कम हो जाती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स ऑकरेंस. सिकल सेल एनीमिक पीपल सबसे ज्यादा ट्रॉपिकल एरियाज में पाए जाते हैं और मोस्टली ब्लैक पीपल्स में नोटेड है. अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेशन 500 न्यू बॉर्न ब्लैक में से 1 ब्लैक इनफैक्ट अफेक्टेड होता है सिकल सेल एनीमिया से. नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट कॉजेस चेंज इन द शेप ऑफ आरबीसी. As you know, normal hemoglobin contains 2 alpha and 2 beta chains. सिकल सेल hemoglobin में बीटा चेन म्यूटेटेड हो जाती है जो शेप को अफेक्ट करती है. म्यूटेशन, बीटा चेन में म्यूटेशन अमाइनो एसिड के रिप्लेसमेंट से होता है. ग्लूटामेट दैट इज प्रेजेंट ऑन द 6th पोजीशन इन नॉर्मल हीमोग्लोबिन सिकल सेल हीमोग्लोबिन में रिप्लेस हो जाता है वेलिन से. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मिससेंस म्यूटेशन. यहाँ सिंगल न्यूक्लियोटाइड दैट इज थाइमीन रिप्लेस होता है एडेनिन से एंड दिस एरर कॉजेस फॉर्मेशन ऑफ एन ऑल्टर कोडॉन दैट इज GUG in place of GAG. Now let's talk about homozygous and heterozygous sickle hemoglobin. When both beta chain get affected with the mutation, the condition is known as homozygous, and when only one chain of beta chain gets mutated and other remains normal, the condition is known as heterozygous. Heterozygous HbS type of humans live normal life without any symptoms for sickle cell anemia, while homozygous HbS type of human is affected with the disorder because sickle cell anemia is an autosomal recessive disorder and only expressed in the homozygous condition. Let's discuss about the abnormalities that is associated with this disorder. First is lifelong hemolytic anemia. Sickle cell RBCs are very weak and fragile. That's why इनका ब्रेकडाउन इजिली हो जाता है और इनफ अमाउंट में आरबीसीज प्रेजेंट ना होने की वजह से ह्यूमन लाइफ टाइम एनेमिक रहता है. The second is tissue damage and pain. कैपिलरीज ब्लॉक हो जाती है जिसकी वजह से टिश्यू तक प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है एंड टिश्यू डैमेज, इन्फ्लेमेशन और पेन जैसे एडिशनल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं. थर्ड इज इन्फेक्शंस. टिश्यू डैमेज एंड अदर काइंड ऑफ सिम्टम्स से इन्फेक्शन की चांसेस भी बढ़ जाते हैं. फोर्थ इज premature death. In maximum cases, individuals below the 20 years get die. Let's see mechanism of sickling. ग्लूटामेट इज अ पोलर अमाइनो एसिड एंड वेलिन इज अ नॉन पोलर अमाइनो एसिड. और जब एक पोलर अमाइनो एसिड का रिप्लेसमेंट एक नॉन पोलर अमाइनो एसिड से होता है तो डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है. हाउएवर ऑक्सीजनेटेड फॉर्म की सॉल्युबिलिटी अफेक्ट नहीं होती है. नाउ लेट्स डिस्कस हाउ स्टिकी पैचेस आर फॉर्म एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डीऑक्सीहीमोग्लोबिन फाइबर. ग्लूटामेट के सब्स्टिट्यूशन से बीटा चेन के आउटर सरफेस पे स्टिकी पैचेस का फॉर्मेशन होने लगता है, but this is only formed in the secret hemoglobin, not in the adult, that is normal hemoglobin. There is a receptor present on the deoxyhemoglobin that is complementary to the sticky patches that is present on the another deoxyhemoglobin. The point is to be noted, there is no any sticky patch that is present on the normal hemoglobin. And sticky patches of one deoxyhemoglobin bind with its receptors that present on the another deoxyhemoglobin, and the process continues and leads to the formation of long chain of molecule of deoxyhemoglobin. Mutation in the normal hemoglobin when leads to the formation of secret hemoglobin. There is a sticky patch gets present on the outer surface of hemoglobin, and when it's changed into the deoxyhemoglobin, its complementary sites binds and polymerization leads to the formation of long chain of molecule of deoxyhemoglobin. That's why its polymerization leads to the formation of long fiber of secret
deoxyhemoglobin. And these fibers alter the shape of erythrocytes to crescent shape. While in case of oxyhemoglobin, complementary receptors are masked, that is oxyhemoglobins पे भी receptors present होते हैं लेकिन वो cover up होते हैं. And point to be noted, sticky patches are present on the oxyhemoglobin but receptors के covered होने की वजह से polymerization नहीं हो पाता है. Normal हीमोग्लोबिन में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं एंड स्टिकी पैचेस एब्सेंट होते हैं. सो कंक्लूजन इज इरिथ्रोसाइट्स की सीकलिंग डीऑक्सीहीमोग्लोबिन के पॉलीमराइजेशन से होती है. अगर सीकल्ड हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजनेटेड कंडीशन में मेंटेन करें तो सीकलिंग अवॉइड की जाती है. सीकल सेल ट्रेट्स आर फाउंड टू रेजिस्टेंट टू मलेरिया. लेट्स सी हाउ. Sickle cell traits provide resistance to malaria, which is a major cause of death in tropical areas. This is explained as follows. Malaria is a parasitic disorder caused by Plasmodium falciparum. Malarial parasite spends a part of its life cycle in erythrocytes. Increased lysis of sickle cell interrupts the parasite cycle. Sickle cell traits provide resistance to malaria. Let's see how. Sickle cell traits provide resistance to malaria, which is a major cause of death in the tropical areas. Malaria is a parasitic disorder that is caused by Plasmodium falciparum. Malarial parasite spends a part of its life cycle in erythrocytes. Increased lysis of sickle cell interrupts the parasitic cycle. Like, as you know, sickle cells are very fragile. Sickle cells are very fragile and it have shorter lifespan than normal erythrocytes, and that's why it interrupts the parasitic cycle. A recent study indicates malarial parasites increase the acidity of erythrocytes, that is its pH down by 0.4, and lower pH increase the sickling of erythrocytes to about 40% from the normal occurring as 2%. That's why entry of the malarial parasite promotes the sickling and it leads to the lysis of erythrocytes. Also, the concentration of potassium ion is low in the sickle cell, which is unfavorable for the parasites to survive. And sickle cell traits appear to be an adaptation for the survival of individuals in malaria-infested regions. Now let's see diagnosis of sickle cell anemia. First is sickling test, in which examination of blood smears get done by addition of reducing agents under the simple microscope where sickling erythrocytes can be detected. Let's discuss about electrophoresis. Electrophoresis get done under the alkaline pH of 8 point. Normal hemoglobins move faster than sickle cell hemoglobin. Sickle cell hemoglobin moves slowly towards anode than adult or normal hemoglobin, because sickle cell hemoglobin moves slowly due to the less negative charge that is caused by the absence of glutamate, because glutamate carry negative charge. Management of the sickle cell disease. Treatment with sodium cyanate control the sickling of erythrocyte because it increased the affinity of sickled hemoglobin towards O2 and lowered the formation of sickled deoxyhemoglobin. But some side effects are observed in the DNS. Some sickled severe anemia requires repeated blood transfusion also, and fetal hemoglobin also reduces sickling. Thank you for watching.